हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उसमें फाइनेंस ऑफिसर का जो पोस्ट है उसका एक टॉपिक अपन यहाँ पे आज कवर करें, जो है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी एनालिसिस और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। मतलब ऐसे दो टॉपिक्स यहाँ पे अपन क्या करें, सॉल्व करें। अपन डेली अभी टू टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे और हर टॉपिक के ऊपर अपन यहाँ पे जो भी वीडियो रहेगा वो 50 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको दो डेली जो वीडियोस पोस्ट होंगे वो डायरेक्टली आपको मिल जाए, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फाइनेंस का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है, देखो ऑप्शन दिए अपने को। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोला है, करंट रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर लिक्विडिटी रेशियो देखते हैं तो उसको बोलते हैं अपन करंट रेशियो। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अ फर्म विद द क्विक रेशियो ऑफ लेस देन वन इंडिकेट। तो अगर वन इंडिकेट अगर करता है तो पोटेंशियल लिक्विडिटी इशू यहाँ पे यूज होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, which of the following ratio measure a company ability to meet long term obligation। अगर कंपनी रेशियो मेजर करना है तो उस मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन के लिए, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओके, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर इंडिकेट। तो हायर लिक्विडिटी, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर अगर इंडिकेट करता है इंक्रीज, तो वो होता है हायर लिक्विडिटी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, what financial metric is used to measure a company ability to cover its interest expenses। आंसर है यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, जो भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट सिक्स, which item is excluded from the calculations of quick ratio। आंसर है यहाँ पे इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री अगर एक्सक्लूड करते हैं तो देखो कैश भी होता है, मार्केट सिक्योरिटीज भी होता है, अकाउंट रिसीवेबल भी होता है। ओके, नेक्स्ट सेवन, अ कंपनी कैश कन्वर्जन साइकिल विल डिक्रीज इफ। आंसर है डे पेएबल आउटस्टैंडिंग इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट एट, which ratio is best for evaluating company short term liquidity। तो कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे करंट रेशियो का। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, अ फाइनेंशियल फोरकास्ट प्राइमरी फोकस ऑन। तो फाइनेंशियल फोरकास्ट मतलब क्या होता है, फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस। नेक्स्ट टेंथ, which forecasting method used historical data for prediction। आंसर है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस से अपन फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 11th, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल बजटिंग इज टू। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट इंश्योर एडिक्वेट कैश फ्लो। ओके, नेक्स्ट 12th, व्हाट डज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 मीन्स। तो इक्विटी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है, डेब्ट इज ट्वाइस द इक्विटी। ओके, नेक्स्ट 13, which of the following is considered liquidity management strategy। liquidity management strategy मतलब क्या, reducing account receivable collection time। okay, next 14, what does an interest coverage ratio of less than 1 indicate। आंसर है insufficient earning to cover interest expenses। okay, next 15, which of the following ratio is used to access financial solvency। तो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी के लिए अपन यूज करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का। ओके, नेक्स्ट 16, बजट वेरिएंस एनालिसिस हेल्प। तो बजट वेरिएंस क्या करता है, एक्सेस फोरकास्ट एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट 17, a favorable working capital ratio is typically considered to be। answer is greater than 1। next 18, which ratio indicate the ability to convert sales into cash quickly।
तो यहाँ पे आंसर आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है वो इंडिकेट करता है अपने को एबिलिटी कन्वर्ट सेल्स इनटू कैश क्विकली। नेक्स्ट 19, which type of budget forecast expected cash inflow and outflow? आंसर इज कैश बजट। कैश बजट में अपन फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क? तो लिक्विडिटी रिस्क कौन रिड्यूस करता है? इशूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर इशू करते हैं तो लिक्विडिटी रिस्क कम होती है। नेक्स्ट 21, अ जीरो बेस्ड बजट स्टार्ट्स विथ। तो जीरो बजट मतलब क्या होता है? जीरो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 22, व्हाट टाइप ऑफ रेशियो इज यूज्ड द कैश फ्लो कवरेज रेशियो? आंसर है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है कैश फ्लो कवरेज रेशियो में डिफाइन होता है। ओके, नेक्स्ट 23rd, which is not a component of कैश बजट। तो देखो कैश रिसिप्ट जो होता है वो होता है कैश बजट का, कैश डिसबर्समेंट भी होता है, देन बजट इनकम स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन कैश सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा नॉट कंपोनेंट बोला है, तो यहाँ पे बजटेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट 24, द करंट रेशियो मेजर। तो करंट रेशियो मेजर किस लिए होता है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी थ्रू। ओके, नेक्स्ट 25, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कैसी करते हैं? फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट 26, अ हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट। तो हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट क्या करता है? हाई लिवरेज। ओके, नेक्स्ट 27, which of the following is an external factor affecting financial forecasting? Answer is interest rate. Okay, next 28, a cash flow forecast primary helps in. Answer is identifying the liquidity gaps. Okay, next 29, in solvency analysis equity capital is considered. Answer is long term financing. Okay, next 30, which budgeting method is based on expected future activities? Answer is activity based budgeting. Next 31, an increase in account receivable will। तो इंक्रीज अगर अकाउंट रिसीवेबल होता है तो लिक्विडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डिक्रीज लिक्विडिटी। नेक्स्ट 32, what is the primary purpose of variance analysis in budgeting? Answer is to compare actual and budgeted performance. Next 33, which ratio indicate company ability to generate operating cash flow to cover total liabilities? Answer है cash flow coverage ratio. Next 34, a high working capital turnover ratio indicate? Answer is efficient use of working capital. Next 35, which of the following is example of financial forecast? तो financial forecast मतलब क्या होता है? बजटेड इनकम स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल फोरकास्ट। नेक्स्ट 36, इफ कंपनी हैज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इट मीन्स। तो अगर कंपनी के पास अगर कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है मीन्स करंट असेट आर लेस देन करंट लाइबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होगा? करंट असेट लेस देन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कौन करता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट 38, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व क्या करता है? फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 39, लिक्विडिटी इज कंसर्न विद। तो लिक्विडिटी कंसर्न विद क्या होता है? कैश अवेलेबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट 40, which component is not a part of master budget। तो मास्टर बजट कंपोनेंट नहीं है मतलब कौन है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अपने पास देखो
कैश बजट है, सेल्स बजट है एंड कैपिटल बजट है। तो ये सब मास्टर बजट के कंपोनेंट्स है, लेकिन कंप्यूटर एनालिसिस ये पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अ कंपनी कैश फ्लो। कंपनी कैश फ्लो कौन डिक्रीज करती है? पेइंग डिविडेंड्स, अगर डिविडेंड्स अगर पे करते हैं तो। ओके, देखो इशूइंग शेयर्स बोला है, सेलिंग फिक्स असेट एंड पेइंग डिविडेंड, एंड फोर्थ बोला है बोरोविंग लॉन्ग टर्म। तो पेइंग डिविडेंड करते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट 42, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपनी हैज हाई लिवरेज। अगर कंपनी हाई लिवरेज अगर हो रही है तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? इट रिलाइज हेवीली ऑन बोरोड फंड्स। नेक्स्ट 43, which ratio measure company efficiency in generating revenue from asset? The answer is asset turnover ratio. Next 44, forecasting in financial management focuses on। forecasting on financial management क्या होता है? strategic financial planning. Next 45, which of the following action would increase liquidity? The answer is delaying accounts payable payment. Next 46, a high quick ratio include? Answer is strong short term liquidity. Next 47, the most relevant factor in liquidity forecasting is? Answer is current asset. Okay, next 48, which type of budget focus on operational performance? Answer is operating budget. Okay, next 49, a long cash conversion cycle indicate? The answer is insufficient cash management. Next 50, which of the following is a solvency matrix? solvency matrix मतलब क्या है? debt to asset ratio. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी अपन कंटिन्यू सॉल्व कर ही रहे हैं, प्लस उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब के लिए थैंक यू।